उत्तराखंड के सभी दाजुओं को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके पास रोज़मर्रा के जितने मेरे से पॉसिबल हो सकेगा वो न्यूज़ लाऊंगा, एक दिन में या रोज़ या एक दो दिन के डिफरेंस में, बट लेके पक्का आऊँगा। तो शुरुआत करते हैं 21 अगस्त 2016 से, जो कि आज के दिन है, रविवार। टर्टल सेंचुरी ऋषिकेश, देहरादून डिस्ट्रिक्ट जो कि गढ़वाल में आती है, उसमें 6 तहसीलें हैं। छठवीं अगर ऊपर से चले तो ऋषिकेश हुई। तो ऋषिकेश में अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इनिशिएटिव, जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है, तो उसके अंतर्गत एक टर्टल सेंचुरी खुल रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ बीन टॉकिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप सच सेंचुरीज इन द गंगा फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, फॉर एक्वेटिक एनिमल विच विल बी यूज्ड टू क्लीन द रिवर। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ह्यूमन एफर्ट्स कम पड़ गए, बट इट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म। These animals have a natural mechanism to get rid of the river pollutants. The program will help in cleaning the holy water of the decomposed or dead bodies which are flown into the Ganges by local people. तो ये जो प्रोग्राम है टर्टल सेंचुरी एस्टेब्लिश करने का, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में खुला, उनमें भी ऐसे सच ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। ऋषिकेश में 500 एकड़ जमीन हैज़ बीन सैंक्शन फॉर द पर्पस by Mr. Chief Minister Rawat sir. Other measures to clean: 400 crematorium will also be constructed so that kacha cremation grounds would be done away with. Background इसके अगर बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा is the implementation wing of National Ganga River Basin Authority. What is National Ganga River Basin Authority? It is a authority developed by UPA government for the mission to clean Ganga. Okay, it is मतलब NMCG. NMCG is a registered body under the Society Registration Act of 1860. Formed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. At national level, NMCG is the coordinating body and is being supported by state level program management groups. Okay, सेंट्रल में तो ये हो गई, और जो स्टेट्स में है वो भी इनको हेल्प करेंगे, जो कि जिनको बोलते हैं SPMGs ऑफ यूपी, उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये भी रजिस्टर्ड हैं अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. Now it was originally formed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, but now they are allocated under Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, MOWR-RD, and means MOWR means Ministry of Water Resources, RD means River Development, and GR means Ganga Rejuvenation. The area of operation of NMCG shall be the Ganga River Basin, including the states through which the Ganga flows, through 10 states and 1 union territory. What are its objective? To ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the river Ganga by adopting a river basin approach. Okay, तो ये एक रिवर बेसिन अप्रोच लेके चलेगा गंगा की सफाई के लिए। टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज, ओके, to maintain minimum ecological flows in the river Ganga with the aim of ensuring water quality and environmental sustainable development. अब इसका विजन क्या है? विजन इसके 4 आप मोटा मोटी मान के चलो कि अविरल धारा, निर्मल धारा, जियोलॉजिकल एंटिटी एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी. एंड व्हाट आर इट्स वर्क? इम्प्लीमेंटेशन वर्क तो इसके बहुत सारे, बट आई हैव मेंशन ओनली 2 here. Implementing the work program of National Ganga River Basin Authority and implement the World Bank supported National Ganga River Basin project. This is the project it is currently working on. The current focus of the World Bank funded National
funded a national Ganga river basin project of NMCGs on 5 major states on the main stems of Ganga, namely Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bihar, and West Bengal. Okay. State. Now, second news is state gets first animal birth control center. Menka Gandhi, who is the Union Minister for Women and Child Development and also the chairperson of the People for Animals, inaugurated the Animal Birth Control Center in Uttarakhand at Dehradun near Kudarpuram. Okay, she says, sorry, ABC means Animal Birth Control Center, scientifically constructed center in Dehradun is the first and the best of its kind in the country अभी तक. ओके ऐसे और सेंटर्स खोले जाएंगे कहाँ पर? मसूरी, नैनीताल और 5 जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो कि हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर एंड काशीपुर. अब कैसे खोला गया, किसकी कोलैबोरेशन से खोला गया? स्टेट एनिमल हस्बेंड्री, यूनियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ देहरादून. See, this is Menka Gandhi and inaugurating the ABC. Who will conduct sterilization and what is the word? And sorry, I have forgotten to mention what is its purpose. Its purpose to inaugurate for the sterilization of the stray dogs. Stray dogs means जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए. Who will conduct sterilization? Veterinarians from Humane Society International. अब Humane Society International क्या है? Humane Society International is one of the international animal protection organization in the world. Is one of the only, एक ही है, to protect all animals including animals in laboratory, farm animals, companion animals and wildlife. If you want to know further, you can log on to www.hsi.org. Allied activities, ABC की allied activities of ABC, you can say of ABC. Fine. डॉग क्रेच सेंटर भी उन लोगों ने प्लानिंग किया है कि वो खोलेंगे. ट्रेनिंग सेंटर टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन डॉग स्टेरिलाइजेशन. फाइन. बैकग्राउंड क्या है? सेंटर में क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज है, जो कि जिसको पहले बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. ओके. इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर आता है. ओके. कब आया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st February 1991 by converting 2 divisions, Department of Agriculture and Cooperation, namely Animal Husbandry and Dairy Development. Further, the Fisheries Department of the Department of Agriculture and Cooperation and a part of the Ministry of Food Processing were further later transferred to this department on with effect from. इतने से इन दोनों डिपार्टमेंटों को भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया. Okay. The department is responsible responsible for the matters relating to livestock production, preservation, protection from disease, improvement of stocks, and dairy development. Okay, the department advises state government, union territories in the formation of policies and programs in the field of animal husbandry. तो जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होंगे उनको ये एडवाइस करेगा इन द फॉर्मुलेशन ऑफ policies and program in the field of animal husbandry, dairy development and fisheries. Okay, it also covers the matter under relating to the Delhi Milk Scheme and National Dairy Development Board. It also looks after matters pertaining to fishing and fisheries, inland and marine. Okay, so our website is www.ahduk.org, but it's not working. I log on to it. So if you find another website of the state animal husbandry, Department of Animal Husbandry of the state so please leave the address of the website below in the comments box, but I think it is not working. Third news is Uttarakhand resident to get a liter of water for ₹1. Okay, ₹1 में पानी देंगे हमारी सरकारें, हमारी उत्तराखंड की सरकार. Uttarakhand government has decided to set up a water vending machines, also get the water ATMs at over 200 locations across the state. The project will start under public-private partnership mode. In order to get water from ATM unit, a user only has to slip a denomination coin into the machine and collect
चिल्ड ड्रिंकिंग वाटर। 1 रुपए का सिक्का या कोई भी डिनोमिनेशन कॉइन जो वो लोग बोलेंगे उसको डालो, और 1 रुपए का ही बोला है वैसे, 1 रुपए का सिक्का डालो और चिल्ड मशीन से पानी पी लो। Okay, water ATM has already been functional at Haridwar railway station in the state to provide safe drinking water to the passengers. Those who are residing at Haridwar may check whether it is there or not. Fourth news is one stop center for distressed movement. Same lady, Miss Menka Gandhi. Miss Menka Gandhi. She, Union Minister for Women and Child Development, also suggested the Chief Minister to our Chief Minister Mr. Rawat to open one-stop center for distressed women. Women who face domestic violence or any other type of atrocities could stay at such one-stop center, which will be equipped with all basic facilities. And Mr. CM said government is keen to open centers and they are proposed to be opened at Haldwani and Dehradun. So with this I beg your leave. Thank you. If you like, please hit the subscribe button and like button, and do tell me whether to prepare further videos or not. Thank you. Bye Dajus.